स्टूडेंट्स स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ लॉ चैप्टर ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ क्वेश्चन आंसर ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं बाय द टाइम अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन लेट मी टेक द मार्कर ट्रू एंड फॉल्स लॉज आर मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट ट्रू ये आप कर चुके हैं दोबारा तो फिर भी फास्ट रिवीजन कर लेने राइट ये हम कर चुके हैं इसलिए दोबारा से कर लेते हैं इसको फास्ट तरीके से तो लॉज आर मेड एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट ट्रू है देयर इज नो सैंक्शन ऑफ स्टेट बिहाइंड लॉज फॉल्स है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज पर्सनल वेलफेयर फॉल्स है लॉज आर इक्वल फॉर ऑल ट्रू है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ फॉल्स है लॉज आर कंसर्न विद द इंटरनल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल फॉल्स है इट इज कंसर्न विद एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल ओनली देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आर कंसर्न विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रू है ऑर्डिनेंस आर इशूड बाय लेजिस्लेचर फॉल्स है ये एग्जीक्यूटिव इशू करता है कस्टम्स आर लॉज इन इटसेल्फ फॉल्स है कस्टम के ऊपर लॉ बेस हो सकते हैं कस्टम अपने आप में लॉ नहीं होते हैं देन 10th है कस्टम्स आर लॉज इन इटसेल्फ ओके 11th है लेजिस्लेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ ट्रू है एंड देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉ ये भी ट्रू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने किया था राइट होपफुली आपको याद होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने क्या था जो सबसे पहला क्वेश्चन है लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस ओके नहीं पहला क्वेश्चन है लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इंफीरियर इसका आंसर है बी ऑस्टिन उसके बाद है लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस एनफोर्स्ड बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी हुज स्टेटमेंट इज दिस ये किसका स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट है आपका हॉलैंड का लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हुज स्टेटमेंट इज दिस ये सामंड का है अगला क्वेश्चन है चौथा लॉ इज द पोर्शन ऑफ दैट पोर्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड थॉट्स एंड हैबिट्स व्हिच हैज गेन्ड डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स backed by the authority and power of government whose statement is this तो ये है वुड्रो विल्सन का ए इसका आंसर ए होना चाहिए वुड्रो विल्सन का है अगला है जजेस डू एंड मस्ट मेक लॉज ए जज while interpreting the law consciously or unconsciously create new laws ये जस्टिस होम्स का है स्टेटमेंट बी जस्टिस होम्स then we have legislature is a healthy society in a healthy society is the main source of law yes it is true ये स्टेटमेंट सर हेनरी मेन का and which of the following is not not the characteristics of law the laws are made by the and enforced by the state ये सही है characteristics है laws are concerned with the external लाइफ ऑफ मैन ये भी ट्रू है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज पर्सनल वेलफेयर ये गलत है सोशल वेलफेयर है ऑल आर बाउंड टू ओबे लॉ ये भी सही है तो इसका आंसर है यानी कि सी गलत है तो यही इसका आंसर है तो आंसर इसका सी है चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज द कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू एन इन्फीरियर तो यहाँ पे आंसर होगा इन्फीरियर आगे है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड लॉ इज फ्रॉम लैग विच इज अ वर्ड ऑफ टीटोनिक लैंग्वेज टीटोनिक TUTONIC टीटोनिक लैंग्वेज आगे लॉज आर डैश बाय द स्टेट लॉज आर मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट चौथा है देयर
is sanction of the state behind the laws. Sanction of the state. States का sanction होता है, यानी कि state की protection होती है law. Next we have every individual living in the state is to obey the laws. Yes. Every individual in the state is bound to obey the law. Next question is, on violating law, courts give punishment. Executive punishment नहीं देता, court देता punishment. Again, the objective of law is social welfare. Social welfare. आठवां क्वेश्चन है, there is dash between moral laws and the law made by state. There is difference between moral laws and laws made by state. Okay? तो बाकी पोर्शन वाला ये हम नहीं करेंगे इसमें अब चलते हैं हम अगले हिस्से पे. अगला हिस्सा हमारा है लॉ. यहाँ पे आ जाता है law meaning, source and kinds. What is the origin of the word law? तो origin of जो हुआ है ये टेक्टोनिक लैंग्वेज के लैग शब्द से होगा. इसका मतलब होता है फिक्स एंड स्टेबल, राइट. देन वी हैव राइट डाउन द मीनिंग ऑफ लॉ. Laws are those fixed and stable rules which are made and enforced by the state, and he who violates laws or these laws invites punishment by the states or from the state. Write down any one definition of law. ऑस्टिन का डेफिनेशन है. आप ऑस्टिन का भी डेफिनेशन कर सकते हैं. ऑस्टिन का बड़ा इजी डेफिनेशन है कि लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू एन इन्फीरियर. यहाँ हॉलैंड का डेफिनेशन है. हॉलैंड कहते हैं कि लॉ इज जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस एनफोर्स्ड बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी. आगे राइट डाउन ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इन्फीरियर. ये भी आ गया ऑस्टिन का भी. राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ. पहला कैरेक्टर है लॉ आर मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट. सेकेंड है लॉज आर इक्वल फॉर ऑल. अगला प्रश्न है राइट डाउन एनी टू काइंड्स ऑफ लॉ. नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ. दो लॉ हैं, national and international law. Now the next question is, what do you mean by international law? The law which regulates the mutual relations among the state is known as international law. International laws are made by the international organizations. What do you mean by international law? Is that part of national law which are made by legislature from time to time to regulate the daily life of the citizen. These are known as the ordinary law. What do you mean by constitutional law? Constitutional law regulates the organization, functions and power of different organs of the government. It is highest law of the country. Next question is, write down any two kinds of law on the basis of the sources. On the basis of the sources, legislative law made by legislatures, judges made law, right? Ordinance by executive made law. What do you mean by ordinances? So when parliament is not in session and there is need of law at that time, the orders issued by executive head are known as ordinances. The approval of the parliament on these orders is taken when the session of the parliament is convened and when they meet for the first time. Next question is, write down any two sources of law. Two sources of law are customs and the legislature. Next question is, what is the significance of public opinion in the formation of law? Public opinion plays an important role, or it is important source of law. While making laws, legislature keeps in mind the public opinion. The laws made according to public opinion are always popular. Write down any two characteristics of a good law. A good law is very clear. So first characteristics is clarity. Then the certainty are the characteristics of law. Certainty, pakka. Clarity, certainty. Which is the most important source of law? Legislature is the most important source of law. Legislature expresses the will of the people in the form of laws. It can revise and reject the old laws and can make new laws. It can revise, reject, right? This is from chapter 30. This is not the part of this chapter, so
We will do it when we do liberty. Next question. These are big questions, 4 marks question. Laws, meaning and sources and kinds. What do you mean by law? So while writing 4 marks and 6 marks questions, I would suggest you write it in 3 parts. First part, make an introduction, intro. Then second part is full body of the answer. Then third part is conclusion. These 3 parts. How you will do it, I'll tell you. चलिए बताता हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे कि लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में फॉर द रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी. विदाउट लॉ there will be chaos and anarchy. So law is very important. Let us do the meaning of law. First meaning of law is the word law has been derived from word lag, which is a Teutonic word, language from which has been taken from Teutonic language, and which means fixed. So laws are fixed rules which are made and enforced by the state, and those who violate them are punished by the state. State carries on its administration according to these rules and also makes changes in them as per the requirements. According to Holland, a law is a general rule of external action enforced by sovereign political authority. So concluding, I would like to say that law is fixed rules made and enforced by the state, right? And it regulates human life, human behavior. This way you can write 4 marks and 6 marks question. Next question is write down any 3 definitions of law. तो सबसे easy definition है, आसान definition है ऑस्टिन का, वो लिख दो आप. Law is command given by a superior to an inferior. Okay? Then we have इस तरह से 3 definition आप कर देंगे, right? और नेक्स्ट है हाउ पब्लिक ओपिनियन इज सोर्स ऑफ लॉ. पब्लिक ओपिनियन सोर्स है कैसे है लॉ का, राइट? तो इसका आंसर भी पहले इंट्रोडक्शन दे देना आपका कि भी लॉ क्या चीज़ होता है. देन पब्लिक ओपिनियन कैसे, पब्लिक ओपिनियन को जो है कोई भी सरकार वो इग्नोर नहीं कर सकती है, और फिर ये आप लिख देना है. ऑर्डिनेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इस तरह से आप इसका मीनिंग निकाल लेना. तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर हो गया, राइट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.